Okay. So Hind Swaraj is a book written by Mahatma Gandhi. It was originally written in Gujarati and later on it was published, sorry, later on it was translated into English by Gandhi himself. Um, ऐसा बहुत कम होता है कि जिसने लिखा है गांधी जी के और भी जितने वर्क्स हैं which he had originally written in Gujarati was later translated into English by different people. But this is a work which was translated into English by Gandhi himself. Okay, so this is the book. हिंद स्वराज और जब हम हिंद स्वराज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तब then it becomes Indian home rule. This is actually a work of philosophy where Mahatma Gandhi has given his views regarding civilization, what it means to be civilized, and what should be the role of technology and modern ideas in our life. Okay. So, it is one of the earlier works of Mahatma Gandhi. He had written this book. Just hold on for a second. Okay, sorry for the interruption. Okay, so he had written this book on a ship while he was traveling from England to South Africa. जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा, he had started working for a firm in South Africa, so he had to travel a lot between nations. So while he was traveling from England to South Africa, he and the journey through sea, the journey through water is generally a very long journey, है ना? It has become very easy for us to travel from one place to another. अगर आपको दूसरे country में भी जाना होता है तो if you travel by air it takes very less time, है ना? लेकिन जो है पहले लोगों को किसके थ्रू जाना पड़ता था? थ्रू वाटरवेज. और जब आप शिप से ट्रैवल करते हो, यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम. हुँ? तो इसी जब इस एक ऐसी ही जर्नी के दौरान जो है उन्होंने बहुत सारे उनके थॉट्स थे कि व्हाट इज़ नॉन वायलेंस एंड हाउ एज़ इंडियंस वी शुड रिस्पेक्ट आवर कल्चर एंड प्रिजर्व इट. ये सब जो उनके थॉट्स थे ये उन्होंने एक बुक के फॉर्म में लिखे जिसका नाम था हिंद स्वराज. नाउ हिंद स्वराज वाज रिटन इन अ डायलॉगिक फॉर्म. Dialogic form meaning that it is a dialogue between two people. Hmm. One is the editor and the other is the reader. So reader is asking the question and the editor is answering these questions. ठीक है, तो आप जब ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे तब आप देखोगे कि जो पूरी बुक है वो किस फॉर्म में लिखी गई है, अ डायलॉग. और डायलॉग किसके बीच में हो रहा है? डायलॉग इज बिटवीन द एडिटर एंड द रीडर. Okay, so this is the book. I'll show you the uh, index. See, here you can see कि रीडर इज आस्किंग अ सर्टेन क्वेश्चन. उसके बाद जो है क्या हो रहा है, एडिटर उसको आंसर कर रहा है. तो पूरी बुक जो है वो इट इज नॉट रिटन इन एसे फॉर्म कि अलग अलग चैप्टर्स हैं और जो है उसमें एसेज हैं. द बुक इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन टू पीपल. Where is the index? Wanted to show you the index and the number of chapters. There are 20 chapters in the book. How did I miss it?
Here is the index. Okay, so now you can see this is the book. There is a preface, then a word of explanation, a message from Mahatma Gandhi, and then these are the chapters. जो कि total कितने हैं 20 chapters. I had told you that there are 20 chapters. Then you can see the topics which have been covered. The Congress and its officials. What was the role of Congress in the national freedom movement? ये सब उन्होंने discuss किया है. What is स्वराज, जो उनकी basic philosophy थी नॉन वायलेंस की, वो जो है होम रूल की, सॉरी नॉट नॉन वायलेंस, स्वराज इज होम रूल. सो व्हाट इज होम रूल is being discussed by Mahatma Gandhi in this chapter. Then the condition of England, what is civilization, why was India lost, the condition of India, जिसमें कि this chapter is divided into three parts in which different aspects of India have been covered. जो चैप्टर आपके उसमें है सिलेबस में, दैट इज व्हाट इज ट्रू सिविलाइजेशन, चैप्टर नंबर 13, एंड चैप्टर नंबर 18 एजुकेशन. ठीक है, तो आपको जो चैप्टर्स इसमें से पढ़ने हैं वो दोनों चैप्टर्स कौन से हैं? चैप्टर नंबर 13, that is what is true civilization, and chapter number 18, which is education. I'm audible to you all? Yes, ma'am. Yeah. Okay. अच्छा. Okay. So we will do the chapter number 13 today. What is true civilization? What is civilization? What do you mean by civilization? Civilization हम किसको कहते हैं? हम सभ्यता. सभ्यता है ना. तो what it means to be a civilized person, है ना. हम कैसे अपने आप को जो है what it means to be civilized, अगर हम सभ्य हैं तो हम कैसे हैं, कि हमें कैसा होना चाहिए. So again, every chapter it begins with a question from reader. आपका जो हर एक चैप्टर है वो किससे शुरू होता है? एक रीडर के क्वेश्चन से. So what is the question that reader puts up in this chapter? You have denounced railways, lawyers and doctors. I can see that you will discard all machinery. What then is civilization? ठीक है, तो दिस इज रेफरेंस टू द अर्लियर चैप्टर्स जहाँ पे गांधी जी ने रेलवेज को डिस्कस किया था, लॉयर्स को डिस्कस किया था, डॉक्टर्स को डिस्कस किया था, एंड he does not hold very high opinion of either railways or lawyers or doctors. Lawyers and doctors, these are modern professions, है ना. पहले जो हमारा सिविलाइजेशन था या जो हमारा कल्चर था, lawyers, there was no need of lawyers actually earlier. जब लिटिगेशन पहले किसके थ्रू हो जाता था? एक मीडिएटर के. अगर आप किसी गांव में रहते हो तो वहाँ का जो भी सरपंच होता था उसके थ्रू जो है अगर आपकी कोई डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो जाती थी. नहीं तो आपके जो राजा होते थे आप वहाँ पे जाते थे अपनी प्रॉब्लम्स लेके. सो लॉयर्स एंड डॉक्टर्स आर टू प्रोफेशंस which are associated with modern civilization, and Gandhi ji has denounced both of these professions, and also he was not in the favor of railways. वो railways के भी favor में नहीं थे. So the reader is very baffled. He is very surprised कि गांधी जी जो भी modernity से associated है, railways, lawyers, doctors, वो सबकी जो है उन्होंने उस सब चीज़ों को नेगेट कर दिया कि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है. अगर हम ये सब चीज़ें हटा दें तो फिर सिविलाइजेशन में क्या बचता है? What according to then is Mahatma Gandhi's view of or the editor's view of civilization? So how he answers to him? The editor is actually the persona representing Mahatma Gandhi. The answer to that question is not difficult.
I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. Nothing can equal the seeds sown by our ancestors. Rome went, Greece shared the same fate, the might of the pharaohs was broken, Japan has become westernized, of China nothing can be said, but India is still, somehow or other, sound at the foundation. The people of Europe learned their lessons from the writings of the men of Greece or Rome, which exist no longer in their former glory. In trying to learn from them, the Europeans imagine that they will avoid the mistakes of Greece and Rome. Such is their pitiable condition. In the midst of all this, India remains immovable, and that is her glory. It is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant, and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes. It is a charge really against our merit. What we have tested and found true on the anvil of experience, we dare not change. Many thrust their advice upon India, and she remains steady. This is her beauty. It is the sheet anchor of our hope. Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. Performance of duty and observance of morality are convertible terms. To observe morality is to attain mastery over our mind and our passions. So doing, we know ourselves. The Gujarati equivalent for civilization means good conduct. So Gandhi ji, he is questioning all the great empires that once were considered to be very good examples of civilization, such as Rome, Greece, Japan. फेरोज कहाँ पे होते थे? फेरोज कहाँ के किंग्स को फेरोज बोला जाता था? मैम इजिप्ट Egypt, है ना? So he is saying that all the civilizations which were once held very great, they have broken down. है ना? There is Rome is not anymore. है ना? रोम के बारे में रोम क्या हो गया? वो खत्म हो चुका है. ग्रीस ग्रीस का भी सेम फेट है. The might of pharaohs was broken. Egypt was also been destroyed. Japan has become westernized. China, nobody knows what is happening in China. So, what is the glory of India that though that all civilizations with time have weakened, they have become they have lost their glory, but India is one civilization which has till time immemorial remained the same. है ना? जो हम जैसे पहले थे हम वैसे भी आज भी हम वैसे ही हैं. ना तो हमारी जो है ग्रेटनेस कम हुई है, ना हमारी जो सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड नॉलेज है वो कम हुई है, जबकि कितने बड़े बड़े एम्पायर्स या कितने बड़े बड़े सिविलाइजेशंस वो आके खत्म होके चले गए. Now he's questioning the Europeans. He's saying that Europeans they try to learn from what happened in Rome, what happened in Greece. Hmm? But what is the point of learning anything from the people or from a civilization which has been destroyed? जो civilization already खत्म हो चुका है. अगर हमें उससे सीखने के लिए क्या मिलेगा? इस क्वेश्चनिंग कि यूरोप जो है किस पे ग्रीक टेक्स्ट पे रिलाई करता है, रोमन टेक्स्ट पे रिलाई करता है, जो उनकी फिलॉसफी है इट इज बेस्ड ऑन ग्रीक एंड रोमन नॉलेज. बट व्हाट इज द रिलायबिलिटी ऑफ दिस नॉलेज? जो सिविलाइजेशन कब का खत्म हो गया उसकी नॉलेज क्या पे हम डिपेंड हो सकते हैं? Such is their pitiable condition. In the midst of all this, India remains immovable, and that is her glory. Now, Gandhiji is saying that we have remained the same from time immemorial. हम जैसे पहले थे वैसे ही हम आज भी हैं. Now, this can be a merit, and this can also be a dismerit. है ना? ये अच्छी बात भी हो सकती है, बुरी बात भी हो सकती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर आप एक ही जगह स्टैग्नेंट हो
तो क्या है ये आप, दैट मीन्स कि आपके अंदर प्रोग्रेस नहीं हो रही है. So this is what he is saying. It is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant, and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes. अगर हम बदल नहीं रहे हैं तो लोग हमें क्या समझते हैं कि हम बहुत इग्नोरेंट हैं, हम जो है बहुत स्टॉलिड, स्टॉलिड मतलब बहुत अड़ियल हैं, अपने आप को जो बहुत जल्दी चेंज नहीं करते. So we, all the negative qualities are being associated with Indians because we refuse to change. What we have tested and found true on the anvil of experience, we dare not change. Many thrust their advice upon India, and she remains steady. This is her beauty. It is the sheet anchor of our hope. बट इफ समथिंग इज गुड, है ना, चेंज की कहाँ जरूरत होती है, जहाँ पे कि कुछ गलत हो रहा हो, जहाँ पे कि कुछ खराब हो, या फिर जो है उससे कुछ बेनिफिट ना हो रहा हो, उसको चेंज की जरूरत है. चेंज इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन एवरीथिंग इज गुड. हमारे कल्चर में जो भी है वो बहुत अच्छा है और इसीलिए हमें चेंज की जरूरत नहीं है. सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ Ma'am, कॉन्डक्ट. ma'am, what is a sheet anchor? शीट एंकर ऑफ अ होप. एंकर आप जानते हो ना, इट इज एन इमेज फ्रॉम शिप. शिप में जो वो एंकर होता है जो कि एक जगह उसको स्टेबलाइज रखता है. अगर शिप को कहीं रुकना होता है, इट ड्रॉप्स द एंकर डाउन, और उसकी वजह से Yeah, वो ma'am. एक ही जगह जो है स्टेबल रहती है. ठीक है, सो दिस इज वन थिंग विच प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू आवर सिविलाइजेशन. Okay, ma'am. Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. Now, Gandhiji, he presents his um his rendition of, or his interpretation of civilization. What, according to him, is civilization? So, what is civilization according to him? It is a mode of conduct. Mode of conduct means it is a kind of behavior which points out to man the path of duty, जो कि इंसान को किस तरफ ले जाता है या क्या समझाता है कि what is our duty. Performance of duty and observance of morality are convertible terms. What is he saying? That performance of duty and observance of morality, they are interchangeable. They are both the same things. अगर आप अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, then you are a moral person. Then your moral sense is good. अगर आप अपनी ड्यूटीज को नेग्लेक्ट कर रहे हो, उनको ठीक से नहीं कर रहे हो, then you are an immoral person. ठीक है, so for Gandhiji, performance of duty and observance of morality, they are interchangeable, they are same in nature. To observe morality is to attain mastery over our mind and our passions. So doing, we know ourselves. The Gujarati equivalent for civilization means good conduct. Now, if we have to be moral, if we are moral, अगर आप बहुत मॉरल पाथ फॉलो करते हो, अगर आपका मॉरल सेंस बहुत स्ट्रांग है, then what it means that you can control your passions, you can control your emotions, you have a mastery over your mind, है ना. अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हो, अगर आप इमोशंस और पैशंस को कंट्रोल कर पाते हो, then only you can be a moral person. For example, the example of corruption, है ना, क्योंकि बिकॉज यू हैव दिस ग्रीड फॉर मनी, आप अपने आप को जो है नहीं रोक पाते कि हम अपने कि आई नीड मोर मनी, दैट दिस थिंग डोमिनेट्स योर माइंड. ये जो मनी, ये पैसे कमाने की जो चाहत है आपकी, वो क्या करती है, वो आपके माइंड को डोमिनेट कर लेती है, एंड देन यू आर नॉट एबल टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम एक्सेप्टिंग अ ब्राइब. If you had control over your mind, you would never willingly take bribe. ठीक है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल व्हाट गांधी जी मीन्स कि अगर आपको मॉरल पाथ फॉलो करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने माइंड, अपने पैशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा.
Now he says that इन गुजराती सिविलाइजेशन के लिए जो वर्ड होता है उसका क्या मतलब होता है? गुड कॉन्डक्ट. So, what is civilization according to Gandhi ji? Civilization is equivalent to good conduct. If this definition be correct, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else. And this is as it should be. We notice that the mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants, and still remains unsatisfied. The more we indulge our passions, the more unbridled they become. Our ancestors, therefore, set a limit to our indulgences. They saw that happiness was largely a mental condition. A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. The rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy. So, what is he saying now? Why he feels that, why Gandhiji feels that India is a very civilized nation. गांधी जी को ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया बहुत सिविलाइज नेशन है, जो उन्होंने डेफिनेशन दी है उस रिस्पेक्ट में? Because in all our scriptures, we are being told how to control our desires, how to control our emotions. आपके जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, या जो हमारे एंसेस्टर्स का बिहेवियर था, वो हमेशा हमें क्या सिखाता था कि हमें कैसे अपने इमोशंस को, अपने पैशंस को एंड आर ग्रीड, how we need to control all these things. इंडियन सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है रिनंसिएशन, है ना? रिनंसिएशन क्या होता है? त्याग. जो चीज आपके लिए जरूरी नहीं है, यू हैव टू रिनंशिएट इट. उसको धीरे धीरे छोड़ते जाओ. आपको जो है हमेशा से ये सिखाया गया है कि जितना जरूरी होगा उतना ही हमें लेना है ना? So he's saying a culture in which since childhood a person is taught this. आपको अगर बचपन से एक कल्चर में यही सिखाया गया है कि आपको संतोष करना है, you have to be content in what you have, you don't have to be greedy, then that culture does not need support or help from any other culture. The mind is a restless bird. He is comparing mind with a bird which is restless, जो कि एक जगह बैठ नहीं पाती, जो कि हमेशा इधर उधर उड़ना चाहती है. The more it gets, the more it wants. And what is the attribute of this bird? कि आप उसको जितना दोगे, वो उतना ही ज्यादा उसकी इच्छा बढ़ेगी, कम नहीं होगी. It remains always unsatisfied. The more we, the same is with our passions, है ना? अगर आपको किसी चीज का शौक है, तो वो शौक जो है आपका, अगर आपको वो चीज मिल जाती है तो वो शौक खत्म नहीं होता, वो और बढ़ जाता है. फिर आपको लगता है कि जो है, ओके, आई हैव बॉट अ न्यू कार. When you have got a new car, you will feel that this car is smaller, I want a bigger car. Then you have a bigger car, then you will feel that this car, I want a better car. फिर आप उससे और better. So you will keep amassing things. You will never get satisfied, like the restless bird, which becomes more restless when it gets what it wants. Our ancestors therefore set a limit to our indulgences. इसीलिए जो हमारे ancestors थे, उनको पता था कि जो है आप अपनी greed को जितना feed करते हो, वो उतना ही बढ़ती जाती है. इसलिए वो हमेशा जो उनसे हमें क्या सीखने को मिला है कि we should try to control our desires and our passions. They saw that happiness was largely a mental condition. You don't get happy when you get things. Or rather, what he wants to say, it's a mental condition, meaning it is independent of anything outside it. बहुत लोग जिनके पास बहुत कम होता है वो बहुत खुश होते हैं, और बहुत से लोग जिनके पास बहुत ज्यादा होता है वो क्या होते हैं? दुखी होते हैं.
है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है, दैट हैप्पीनेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आवर एक्विजिशंस, ऑफ आवर पोजीशंस। हैप्पीनेस हमारे पास कितना सामान है, कितना नहीं है, उससे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करती। The rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy. Millions will always remain poor. Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures. We have managed with the same kind of flow as existed thousands of years ago. We have retained the same kind of cottages that we had in former times, and our indigenous education remains the same as before. We have had no system of life corroding competition. Each followed his own occupation or trade and charged a regulation wage. It was not that we did not know how to invent machinery, but our forefathers knew that if we set our hearts after such things, we would become slaves and lose our moral fiber. They therefore, after due deliberation, decided that we should only do what we could with our own hands and feet. So, what is the argument that Gandhiji is presenting? He is saying that India is a country where there is so much population in India. Hmm? So, there will always be millions of people who would be poor. कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो है सभी लोग जो है रिच हो जाएं और कोई भी इंडिया में पुअर ना बचे। दिस इज अ रियलिटी विद विच वी हैव टू कम टू टर्म्स विद। और हम इस रियलिटी से कैसे जो है हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या कैसे हम इस रियलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं? बाय नॉट डिस्प्लेइंग आवर लग्जरीज। इंडिया में गांधी जी का कहना है कि कभी भी ये कल्चर नहीं था कि आपके पास जो है आप उसको लोगों को शो ऑफ करो। बिकॉज व्हेन यू टेंड टू शो ऑफ योर लग्जरीज, व्हेन यू टेंड टू शो ऑफ योर मनी, देन द डिसकंटेंट अमंग्स पीपल इट इंक्रीजेस, है ना। इसीलिए जो है, जो पहले राजा महाराजा होते थे वो भी जो है बहुत कंट्रोल्ड वे ऑफ लिविंग था उनका, है ना। कोई उनके सामने अगर कोई साधु आता था तो वो पहले उसको खड़े होके उसके सामने हाथ जोड़ते थे। ही विल गिव यू दिस एग्जांपल कि इंडिया हैज ऑलवेज हैड अ कल्चर वेयर people do not discriminate, where people have not discriminated on the basis of wealth. This is what he believes. और इसीलिए जब हम शो ऑफ नहीं करेंगे, जब हम जो है अपनी वेल्थ को या हम अपनी रिचेस को डिस्प्ले नहीं करेंगे, then in a way a status quo is maintained. Discontent is not spread among people. ये saying कि जैसे हमारे यहाँ प्लो, व्हाट इज अ प्लो? इससे आप फार्मिंग में प्लो यूज होता है, क्या करते हो आप प्लो से? व्हाट इज अ वो To plough the जोतना है। fields. क्या करते हैं हम प्लो से? खेत जोतना जिसको कहते हैं ना, जो वो Yes, ma'am. लाइन्स ऐसे बनती हैं जिसमें आप सीड्स डालते हो, है ना। सो ही सेइंग कि Yes, ma'am. we have a huge number of farmers. India lived in villages. ये आप महात्मा गांधी के टाइम के बाद के टाइम के बारे में सोच के जो है आप you have to picturize this, that India lived in villages at that time. Cities were not there. So majority of people were farmers. Hmm? And they were using the same kind of plow that the ancestors had used. उसमें उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं किया, वो जैसे उनके एंसेस्टर्स यूज करते थे वैसे ही वो क्लोज आज भी यूज हो रहे हैं। जैसे घर पहले बनते थे वैसे घर जो है मिट्टी वाले वो अभी भी बन रहे हैं। जो एजुकेशन सिस्टम पहले फॉलो होता था वही एजुकेशन सिस्टम आज भी फॉलो हो रहा है। नाउ व्हाट इज गुड इन दैट? क्या अच्छा है? अगर हम चेंज नहीं कर रहे हैं अपने आप को तो उसमें अच्छा क्या है अकॉर्डिंग टू गांधी जी? दैट मीन्स वी डू नॉट हैव कंपटीशन विद ईच अदर। जब आप एक दूसरे से कंपटीशन करते हो तब आपको लगता है कि अच्छा इसके पास ये वाला फ्लो है तो मैं ऐसा यूज करूंगा, इसके पास ऐसा घर है तो मैं ऐसा घर, मेरा घर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, दिस मीन्स दैट वी नेवर हैड दिस
sense of competition, which was so detrimental for the civilization. अगर हम सब, देयर वाज अ सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जो अमीर है जो गरीब है उसका भी घर वैसे ही है, वो भी वैसे ही प्लो यूज कर रहा है, वो भी वैसे ही स्कूल्स में अपने बच्चों को भेज रहा है. सो देयर वाज a kind of uniformity which encouraged people, or which rather helped in not making the poor feel discontented. And he's also saying, it was not that we did not know how to invent machinery, but our forefathers knew that if we set our hearts after such things, we would become slaves and lose our moral fiber. They therefore, after due deliberation, decided that we should only do what we could with our hands and feet. इसीलिए जो है वो किसी कंपटीशन में नहीं पढ़ना चाहते थे, वो जो है आपस में एक दूसरे से जो है किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते थे. इसलिए उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, हर काम अपने हाथों से करेंगे. देयर इज डिग्निटी इन वर्किंग थ्रू योर ओन हैंड्स एंड दैट शुड बी रिस्पेक्टेड. They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. And if you are working with your hands and feet, अगर आप खुद जो है सारा manually काम कर रहे हो, then that makes you healthy also. That keeps you healthy. They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance, and that people would not be happy in them, that there would be gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. He goes on to say that large cities. Now we have seen the development of large cities, but it was a concept which was very new at that time. है ना, जब महात्मा गांधी ने बुक लिखी तब सिटीज बहुत कम थी, और लार्ज सिटीज जो कॉन्ग्लोमेरेट्स जिनको हम कहते हैं कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज हो, फैक्ट्रीज हो, लोग उसमें काम कर रहे हो, मास प्रोडक्शन हो, ऐसी सिटीज जो है बहुत कम थी इंडिया में. और गांधी जी का क्या मानना था कि दीज सिटीज आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द इंडियन सिविलाइजेशन. अगर ऐसी सिटीज डेवलप हो गई तो क्या होगा, इंडिया का सिविलाइजेशन इट विल बी डिस्ट्रॉयड, वो बर्बाद हो जाएगा. क्यों? बिकॉज ऑल काइंड्स ऑफ वाइसेस विल प्रिवेल देयर. जितने भी ह्यूमन वाइसेस हैं वो क्या होंगे, वो सब उस सिटी में होंगे. जैसे कि there will be thieves and robbers, prostitution, poor men would be robbing the rich men. Now it is very difficult in this time, in the present time, in the current context, to believe in the, आपको लग रहा हो, I don't know, अच्छा, I will ask you in the end whether you agree with the views of Mahatma Gandhi or not, then we will discuss this. They were therefore satisfied with small villages. They saw that kings and their swords were inferior to the sword of ethics, and they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and fakirs. Okay, so he's saying that money was given respect in our country. जिनके पास पैसे होते थे उनको रिस्पेक्ट मिलती थी, but more than that, people who were morally strong, people who were more knowledgeable, they were given more respect than wealth. पैसे से ज्यादा हम किसको रिस्पेक्ट करते थे, नॉलेज को, मोरालिटी को. एंड देयरफॉर जो ऋषिज और फकीर्स थे उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट होती थी हमारे कल्चर में एज कंपेयर टू किंग्स. A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others. This nation had courts, lawyers, doctors, but they were all within bounds. Everybody knew that these professions were not particularly superior. Moreover, these wakils and vads did not rob people. They were considered people's dependents, not their masters. Justice was tolerably fair. The ordinary rule was to avoid courts. There were no touts to lure people into them. This evil, too, was noticeable only in and around capitals.
The common people lived independently and followed their agricultural occupation. They enjoyed true home rule. So he's saying a nation who gives more respect to fakirs or to rishis is a nation which does not need to look to other civilizations to learn from them. जो अगर कोई ऐसा नेशन है जो कि फकीर्स को और ऋषिस को ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है एज कम्पेयर टू किंग्स, वो जो है उस नेशन को, उस सिविलाइजेशन को किसी और सिविलाइजेशन से सीखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। नाउ आवर नेशन हैड कोर्ट्स। इंडिया में हमेशा से कोर्ट्स रहे हैं, लॉयर्स रहे हैं, डॉक्टर्स रहे हैं, लेकिन जो हमारे लॉयर्स होते थे हम उनको वकील कहते थे, और जो डॉक्टर्स थे उनको हम क्या कहते थे? वैद कहते थे। और ये प्रोफेशंस नहीं थे। आज हम इन सब चीज़ों को बीइंग अ लॉयर और बीइंग अ डॉक्टर हम किस तरह ट्रीट करते हैं कि ये प्रोफेशंस है और मीन्स टू अर्न मनी, एक पैसा कमाने का जरिया है। लेकिन उस समय वकील और वैद क्या होते थे? दे वर सर्वेंट्स टू द पीपल। वो लोगों मैम को पहले जो वकील और वैद होते थे तो मैम उनके पास मैम कोई मतलब ग्रेजुएट, दे वर नॉट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट, तो मैम इसलिए उनके पास मतलब नॉलेज थी, तो इसलिए तो मैम उनको वकील या वैद कहते थे। लेकिन पर आज मैम वो प्रोफेशन हो गया, तो दे आल्सो हैव डिग्रीज, दैट इज व्हाई। प्रोफेशन हो गया है, बट गांधी जी जिस पॉइंट को यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहते हैं वो ये एम्फेसाइज करना चाहते हैं द मनी दैट इज इन्वॉल्व, है ना। अब आप देखते हो कि कई बार डॉक्टर्स जो है वो आपको गलत डायग्नोसिस देते हैं, या आपका जो डिजीज है उसको ज्यादा सिवियर करके बताएंगे, और एक कंसल्टेशन का द फी इज सो हाई, है ना। और आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले वो आपको टेस्ट लिख देते हैं बहुत सारे। तो ऐसा तो नहीं था कि पहले जो है लोग बीमार नहीं होते थे, उनका ट्रीटमेंट नहीं होता था। नाउ सो मेनी टेस्ट आर रिक्वायर्ड, इट इज बिकम अ मीन्स टू अर्न मनी। पहले जो ये मनी वाला एंगल था वो नहीं था। डॉक्टर्स जो है वो जो वैद होते थे वो चाहते थे कि वो लोगों की हेल्प करने के लिए थे, वो उनसे पैसे लेने के लिए नहीं थे, है ना। पुराने पुराने वैद्यों की जो है कहानी सुनो तो आपको क्या सुनने को मिलता है कि उन्होंने कुछ पैसे नहीं लिए, उन्होंने कहा कि हमारे मेरे घर में ये सामान ले जाना, खाने पीने का थोड़ा बहुत, है ना। तो दे वर देयर टू सर्व पीपल। उनके लिए जो है लोगों को ठीक करना कोई प्रोफेशन नहीं था, उनको लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता था, और इसलिए जो है वो लोगों की ये सब काम करते थे। अब लोग जो है डॉक्टर क्यों बनते हैं या लॉयर क्यों बनते हैं? क्योंकि एक जो मेंटल सेटअप होता है कि जो है बहुत पैसे कमा सकते हैं। जो एक मेन एम्बिशन होता है डॉक्टर या लॉयर बनने का, वो क्या होता है कि हमें पैसे कमाने हैं, और इसलिए जो है हम डॉक्टर या लॉयर बनना चाहते हैं। दिस इज व्हाट गांधी जी इज क्रिटिसाइजिंग हियर। There was simplicity at that time, simplicity in every field, in every profession at that time. People were not so complex, and money was not always the motivation to work or help the other person. Ma'am, I want to ask the meaning of this line. There were no doubts to lure people into them. बेटा टाउट्स कहते हैं जो कमीशन लेके लोग काम करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट के आसपास जो है आप जाओगे, कभी टच वुड आपको काम ना पड़े ऐसा, लेकिन आपका कोई केस चल रहा है और आप कोर्ट के आसपास घूम रहे हो, तो वो आपको जो है कहेंगे कि इस वाले वकील से बात करा देता हूँ, और जो है ये काम ऐसे हो जाएगा, ये काम वैसे हो जाएगा, और फिर जो है वो अपना काम कराने का कमीशन लेते हैं, है ना। तो जब जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे भी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, अच्छा आपके साथ ऐसे हो गया तो इससे तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, पहले वो फियर क्रिएट करते हैं आपके माइंड में। देन दे विल से कि इतने पैसे दोगे तो फिर मैं इससे बात करा दूंगा, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दीज आर डाउट्स। हिंदी में एग्जैक्टली क्या वर्ड होता है आई डोंट नो। मैम वो रिश्वतखोरी। और जो वो होते हैं ना मीडिएटर्स जो होते हैं, यस मैम। हाँ उनको टाउट्स कहते हैं। सो ही इज सेइंग कि दिस हैज बिकम सो कॉमन इन बिग सिटीज, बट ऐसा पहले नहीं होता था कि जो है कोर्ट के बाहर या जो है मतलब लिटिगेंट्स के पास जाके जो है उनसे उनको अंदर फियर क्रिएट करना और उनसे पैसे
लेना. The common people lived independently and followed their agricultural occupation. जो लोग गांव में रहते थे उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी वो गांव में ही सॉल्व हो जाती थी और उन्हें कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें राजमहल जाना पड़े या उनको जो है अपनी प्रॉब्लम्स लेके कहीं दूर जाना पड़े सॉल्व करने के लिए. एंड फॉर गांधी जी दिस वाज द रियल होम रूल, जहाँ पे वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. एक गांव अपने आप में एक यूनिट है, वहां पे जो है उनका प्रोडक्शन भी होता है, उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं है और अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो वहीं पे सॉल्व भी हो जाए, है ना. सो दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन आउटसाइड दिस विलेज एंड फॉर हिम दिस वाज द ट्रू होम रूल. And where this cursed modern civilization has not reached, India remains as it was before. The inhabitants of that part of India will very properly laugh at your newfangled notions. The English do not rule over them, nor will you ever rule over them. Those in whose name we speak, we do not know, nor do they know us. I would certainly advise you and those like you who love the motherland to go into the interior that has yet been not polluted by the railways and to live there for 6 months. You might then be patriotic and speak of home rule. Now you see what I consider to be real civilization. Those who want to change conditions, such as I have described, are enemies of the country and are sinners. So he's saying where modern civilization has not reached yet, जहाँ पे कि ये न्यू आइडियाज अभी तक नहीं पहुंचे हैं सिविलाइजेशन के, जो इंटीरियर के गांव हैं जहाँ पे कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अपने आप में इंडिपेंडेंट यूनिट्स होते हैं. आप वहां जाके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि होम रूल क्या है. What is the next question that the reader puts up? It would be all right if India were exactly as you have described it. But it is also India where there are hundreds of child widows, where 2-year-old babies are married, where 12-year-old girls are mothers and housewives, where women practice polyandry, where the practice of niyog obtains, where, in the name of religion, girls dedicate themselves to prostitution, and in the name of religion, sheep and goats are killed. Do you consider these also symbols of the civilization that you have described? So now the reader is questioning Gandhi ji that you have painted such a rosy picture of your civilization. बहुत अच्छा अच्छा आपने जो है civilization के लिए बताया. But we all know that there are certain aspects of your civilization, such as जैसे कि child marriage, और जो है यहाँ पे की प्रैक्टिस ऑफ नियोग है. देयर इज प्रोस्टिट्यूशन ऑल्सो, सैक्रिफाइस होता है, एनिमल सैक्रिफाइस. such places, such practices you have not talked about. रीडर क्या कहना चाह रहा है कि जो है गांधी जी ने जो पिक्चर पेंट करी है हमारे सामने सिविलाइजेशन की, he has left many things, many practices of Indian culture which were not supposed, which are not considered to be good. तो उनके बारे में जो है गांधी जी को क्या कहना है. So editor says, you make a mistake. The defects that actually you should realize that reader and editor are the same, है ना. ये दोनों जो पर्सोनाज हैं, दे बोथ आर द पर्सोनाज ऑफ गांधी जी. गांधी जी ही रीडर बन के जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं और गांधी जी ही एडिटर बन के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं. The defects that you have shown are defects. Nobody mistakes them for ancient civilization. They remain in spite of it. Attempts have always been made and will be made to remove them. We may utilize the new spirit that is born in us for purging ourselves of these evils. But what I have described to you as emblems of modern civilization are accepted as such by its votaries. The Indian civilization, as described by me, has been so described by its votaries. In no part of the world and under no civilization have all men attained perfection. The tendency of the Indian civilization is to elevate the moral being,
That of the Western civilization is to propagate immorality. The latter is godless. The former is based on a belief in God. So understanding and so believing, it behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization, even as a child clings to mother's breast. So what Gandhiji has to say about these criticisms, that there are merits and there are also demerits in every civilization, है ना? Nothing is perfect. अगर आप सोचोगे सब कुछ किसी civilization में everything is perfect, that cannot be true. So there are demerits and there are also merits. But the merits outweigh the demerits when we talk about Indian civilization. जब हम Indian civilization की बात करते हैं तो merits ज़्यादा हैं और demerits कम हैं. And also we keep on trying to eradicate all the evil practices that are associated with Indian civilization. है ना? ऐसा नहीं है कि efforts नहीं चल रहे हैं कि हम चाइल्ड मैरिज को जो है बंद करें या और भी जो है जितने भी डीमेरिट्स हैं इंडियन civilization में उसको दूर करने के लिए we are making efforts. But we cannot destroy a civilization because it has some demerits. हम किसी civilization को renounce नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कुछ demerits हैं. Because nothing is perfect. What is important? That we are making efforts to remove these demerits. He calls the Western civilization, जब वो compare कर रहे हैं Indian civilization और Western civilization को, he is calling Indian civilization as a civilization which believes in God. God. है ना? और जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है या जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इट इज गॉडलेस एंड देयरफॉर इट इज स्प्रेडिंग इमोरलिटी. वो गॉड में बिलीव नहीं करते, इसीलिए जो है जो भी उनके एक्शंस हैं वो कैसे हैं, वो इमोरल हैं. Okay, so here it ends. This is the end of the chapter. What is true civilization? Only this much. No, there is one more chapter that we have to do from this book. इस book से जो है हम